Hello guys, welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की इस वीडियो सीरीज में पिछले वीडियो में हम लोग ने बिटवाइज एंड के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग बिटवाइज और के बारे में जानेंगे। अब हम लोग आते हैं बिटवाइज और पे। बिटवाइज और एकदम लॉजिकल और की तरह ऑपरेट करता है, लेकिन बिट लेवल पे। जैसा कि ये बिटवाइज है, इसमें एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमें रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा, और अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हैं तभी हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और ट्रू को आप लोग एज अ 1 कंसिडर कर सकते हैं और फॉल्स को एज अ 0। चलिए अब हम लोग बिटवाइज और ऑपरेटर का एक प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस बिटवाइज और। We have taken hash include stdio.h and hash include conio.h. Then we have taken void main, and we have taken 3 integer type variables, namely a, b and c. So the value of 5, which is in bit, is 101, and the value of 9 in binary number is 1001. So after that, clear screen, which will clear the output screen. And then we have assigned a bitwise or b to c. Bitwise or operator work as same as logical or works. That is, whenever one of the value of the operand is true, it will give true as a result, and whenever both the value of the operands are false, then only it will give false as a result. So let us see what could be the result. So here you can see 1, and here also you can see 1. So these two are true. So what the result will be, I am writing from back side. If you will see this one and one at from the very last at first place, both are true. So we will get true. We will get true at the very last place. Then after that, both are false. Then we will get 0. And then after that, 1 is true. So we will be getting, since 1 is true, then the output will be true. We will be getting 1. And then after that, this one is true, then we will again get true, that is 1, and rest all of them are false. So what will we will be getting 1, 2, 3 and 4 false. So now let's think of an desired output in a decimal number. So we will convert this. This will be multiplied by 2 की power 0. Then this will be multiplied by 2 की power 0. That will be 1. So we will write 1 here. Then plus. This will be multiplied by 2 की power 1. That will be, when we will multiply something by 0, it will give 0. So write 0. 1 will be multiplied by 2 की power 2. That will be 4 into 1 will be 4. And then here 2 की power 3 will be multiplied by 1. Then 2 की power 3 will be 8. And it will be multiplied by 1, it will give 8. So the final total will be 13. So the desired result will have to be 13 itself. So let's see. No error here, and now we are getting 13. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिटवाइज नॉट के बारे में डिस्कस करेंगे।